गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30 7:27, यस 7:27 हुए हैं और 7:30 बजने में 3 मिनट का समय है। लेकिन परशुराम कुमार जी उपस्थित हैं तो मुझे लगा 7:30 बज चुके हैं। सो लेट अस बिगिन आवर इवनिंग सेशन। संध्याकालीन सत्र की हम शुरुआत करें और जो रूटीन आपने दिया है विकास प्रजापति ने, तो उसके अनुसार आज का दिन सी सेट का दिन है डियर एस्पिरेंट्स। सो सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। जीएस पेपर 2 इसे कहा जाता है एक्चुअली सी सेट। तो ये लोक बोलचाल की भाषा है और उसमें आप देखेंगे कि 80 क्वेश्चंस, लेकिन टोटल मार्क्स 200 होता है। तो एक जो प्रश्न है वो 2.5 मार्क्स का होता है डियर एस्पिरेंट्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वालिफायर है, तो बिना इसके क्वालिफाई के जीएस पेपर 1 ये देखा नहीं जाएगा। तो इसलिए इसमें 33% एग्जैक्टली 33% मार्क्स आपको लाना आवश्यक है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये 33% का तात्पर्य हुआ कि आउट ऑफ 200 यदि आप 67 एग्जैक्टली 67 आप लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। सो दिस इज क्वालिफाइंग पेपर। साक्षी, वेरी गुड इवनिंग। सो वी शुड प्रिपेयर इट वेल एंड वी शुड पे मोर एंड मोर अटेंशन। ज्यादा से ज्यादा इसमें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है और पैटर्न समझने की आवश्यकता है। जहां तक सिलेबस की बात है तो इसमें सिलेबस काफी महत्वपूर्ण है और सिलेबस में आप देखेंगे रीजनिंग, मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारे क्षेत्रों से प्रश्न हैं। विकास प्रजापति, गुड इवनिंग। सो the questions relate to almost all segments, not only mathematics, that is up to 9th or you may say 10th standard, and then mental ability, reasoning is also there, data expression, that is also there. So dear aspirants, at least 30 questions out of 80 questions relate to English passage. Okay, passage related questions. So 30 questions are there. So take for example, you are not attempting a single question from mathematics or reasoning, you should say mental ability. Okay, still then if you correct only 27 questions out of the 30 English comprehension related questions, then you are bound to qualify. Okay, so there is negative marking. Of course, there is negative marking. So our approach should be whatsoever you attempt in the C set, that is a GS paper 2. Okay, you should be confident enough with regard to its correctness. Okay, the sum should be correct one, and the answer should be undoubtedly okay correct. That's so why you should be able to qualify this paper. So the marks required is 67 minimum, that is 33% of the total marks 200. So I hope you have understood the basics of this paper. I have narrated, and I have also narrated it before this class, dear aspirants. So time and again I used to speak to you so that it should be kept in your mind and you should not forget. Okay, there should not be a single, any space, a little space of confusion. Okay, the thing should be quite clear that you have to do this, you have to do that. Now practice is most important. Why do I say? Because you see there is a pattern and most of the questions are according to that pattern. Mr. Alam, good evening, very good evening. So I was telling you about
the basics of the paper CSAT. Mr. Vikas Prajapati has framed the routine, and according to his routine, today is Saturday, and Saturday we have to do CSAT. Tomorrow is current affairs, and we will wind up the most important national and international events will be summed up tomorrow. So here comes the question number 1. I will take up at least 10 to 15 questions every day, and after doing 5 to 10 classes, we will sum up. Because by that time you will be able to notice the trend of this paper. What is the trend? Okay, how many questions from which segment? Today I have fragmented it, okay, into 2 parts. English comprehension, that is question related passage, okay, passage, and then questions. So 30 questions from that very segment, and rest 50 questions from mathematics, reasoning, data expression, like that. So 30, 50 becomes 80 questions in GS paper 2, that is commonly known as CSAT. Now everything is quite clear. How many 5-letter words? Here comes the question number 1, and you have to listen patiently. You have to attempt it. So first you should understand the demand of the question. Okay, what have to be done? What is required? So how many 5 letters word? How many 5 letters words? With or without meaning? Okay, there is no question of meaning. It should be having meaning or it should be without meaning. Can be made using all the letters of word Delhi. So Delhi has 5 letters: D, E, L, H, and I. So Delhi has 5 letters, so that each word has to start with D and end with I. Okay, so A 24, B 18, C 12, and D 6. Okay, so what should be the answer? Now please try your level best, dear aspirants. I will tell you the answer. So every word starts with D and ends with I. Now only 3 letters are left: E, L, and H. E, L, and H. Okay, so we may use E 3 times, okay, and we may also use L 2 times and H only 1 time, dear aspirants. So what will be the answer? Total base number 1, we will start D, okay, and then into 3, into 2, into 1, into 1. So the answer should be 6. 3 multiplied 2. So 3 2 are 6, dear aspirants. So 6 is the answer. You may write this question. I will be a little bit slow. How many 5 letters words with or without meaning can be made, बनाया जा सकता है, using all the letters of word Delhi, D-E-L-H-I, so that each word has to start with D and end with I. So D and I has to be there. So only 3 letters are left. Yes, Sakshi, well done, good answer. Thumbs up for your correct answer. So we have only 3 letters left. Okay, E, L, and H.
So 6 is the correct answer. I hope you have understood it. Now let us see how many, this is question number 2, how many pairs of natural numbers, I hope you know natural numbers, are there such that the difference of whose square is 63. The difference of whose square is 63. I'm going to repeat it for your better conception, better understanding. How many pairs, how many pairs of natural numbers are there such that the difference of whose square is 63? 63. Option A 3, B 5, C 4 and D 2. Option A 3, B 5, C 4 and D 2. I hope you have understood this question. So attempt please. How many pairs of natural numbers are there such that the difference of whose square is 63? Now dear aspirants, let the natural number be x and y, because we have to find out the difference. So we will have two entities as x and y. Then x square minus y square is 63. Okay. Then what is the equation? X plus y bracketed, x plus y, x minus y, sorry, is equal to 63. Now factors of 63. 1 is also factor of 63. 21 is factor of 63. Okay. 3, 21, 3 and 9 and 7. 9 7 ja 63. 21 3 ja 63. So the factors of 63, 1, 63, 21, 3 and 9 and 7. So dear aspirants, 1 and 63. How you will put it? X plus y is equal to 63. X minus y is equal to 1. Dear aspirants, so x is 32 and y is 31. This is the difference. Now 21 and 3. What is the equation? X plus y is 21 and x minus y is 3. 9 7 जा 63, 9 7 63. अब वहां पे कैसे होगा? ओके, x plus y is 9, x minus y is 7. ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ? x is 8, y is 1. So dear aspirants, the answer to this question is 3. The answer to this question is 3. Okay, so 3 is the answer. How many pairs of natural numbers are there such that the difference of whose square is 63? So I hope you have understood it. Now, another most important question, you will find it there. और इसी तरह के प्रश्नों पर वे दृष्टिपात करते हैं. यस साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट. और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सी सेट पे ध्यान दिया है. व्हाट इज द लीस्ट मतलब छोटा से छोटा. व्हाट इज द लीस्ट डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का कोई संख्या व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6, यदि उसमें 3 5 4 5 या 6 का भाग लगता है तो रिमाइंडर यानी शेष 2 बचता है. इन ईच केस A
1012, B 1022, C 1122, and D 1222. I hope you have written it in your notebook, and now you will start solving this sum. So, what is the sum? Let me repeat it so that you should be able to write it in your notebook. What is the least 4-digit number? वो सबसे छोटी 4 डिजिट की संख्या क्या है? When divided by, जब उसमें 3, 5, 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6, ओके, 3, 4, 5, एंड 6, का डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 2 बचती है। इन ईच केस तो वो कौन सी संख्या है? ए 1012, बी 1022, सी 1122 एंड डी 122। सो डियर एस्पिरेंट्स, अब इसको आपने बनाना है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो वो 4 डिजिट की जो संख्या है, यदि 3 से, 4 से, 5 से, 6 से हम भाग लगाते हैं तो उसमें रिमाइंडर 2 ही बचेगा। वंडरफुल साक्षी, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने इतने अच्छे से सी सेट को तैयार किया है, और सिविल सर्विसेज एकेडमी के जो ये क्लासेस चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो आज हमें आशा की किरण दिखाई पड़ रही है कि निश्चित रूप से आप कंपीट करने वाली है। विकास प्रजापति पर भी होप है, उनका जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा है, सो वो निश्चित रूप से नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो और इसमें यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्विक आंसर आपने दिया है, क्विक आंसर आपने दिया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। These are basics, mathematics basics, okay? Number, then LCM, HCF, ratio, percentage, okay? Now, time and distance. So such type of questions you will find there. Proportion, ratio, such type of questions you will find there. The recurring decimal representation, recurring, आप समझते हैं recurring का मतलब 1.27 27 dot 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 dot, this is recurring, is equivalent to, अब ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 13/11, बी 14/11, C 127/99, dear aspirants, and D 137/99. So what should be the answer to this question? Before going into the details, or I should say before solving this sum, I should repeat it for your better understanding. So please concentrate. You may write it. The recurring, okay, and B is the correct answer, Mr. Parasura. So thumbs up for your correct answer. बहुत अच्छा आंसर आपने दिया. 14/11 is the correct answer. The recurring decimal representation 1.272727 is equivalent to 14/11. अब ये जो सम है डियर एस्पिरेंट्स, तो यहां पर हमें ये बिल्कुल देखना पड़ेगा, ओके, कि आपने इसे बनाया, और मे बी की कोई जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल इसे करेक्ट बनाया. दिस इज 1.272727 is equivalent to 14/11. Now, such type of question you will also find. What is the missing term
at the rate in the following, at the rate, ओके, ए को हम कवर अप कर देते हैं एट द रेट ए सी पी क्यू इज टू, मतलब दो बिंदु, ओके, अनुपात का, बी ई एस यू, देन समानुपात, चार बिंदी, एम एन जी आई इज टू, मतलब दो बिंदी, एट दी रेट। अब एट दी रेट के जगह पर क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार फिर से, व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट, मतलब उसे आप ब्लैंक समझें, उस जगह पर क्या होगा इन द फॉलोइंग। तो उसका सीक्वेंस क्या है, ए सी पी क्यू, ए सी पी क्यू इज टू दो बिंदी, बी ई एस यू, सो ए सी पी क्यू इज टू बेसु, बी ई एस यू, ओके। नाउ चार बिंदी, समानुपात, एम एन जी आई इज टू व्हाट, एम एन जी आई इज टू व्हाट। नाउ द ऑप्शंस, ए एन पी जे एल, बी एन ओ जे एम, option C is NPIL, and option D is NPJM. Dear aspirants, now you have to solve this question. Excellent. Sakshi, your answer is also correct. 14/11, the previous question. Now solve this. This is reasoning based. ACPQ is to, and Mr. Parsuram is telling D is the answer, and here is thumbs up for your correct answer. Wonderful, Mr. Parsuram, you are moving, और साक्षी आगे आगे चल रही हैं, rather she is running fast, और आपने भी पीछा करना शुरू कर दिया, so it's very very nice thing. NPJM is the correct answer. NPJM is the correct answer. और इसमें कुछ भी नहीं था, ए के बाद बी आता है और सी के बाद ई आया, मतलब डी को लुप्त कर दिया गया, दूसरा नंबर। इसी तरह से पी के बाद क्यू आया, जबकि पी क्यू आर दो छोड़ दिया गया, तो दिस इज सीक्वेंस। और कैलाश ने भी लिखा डी, सो कैलाश जी योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। द परशुराम जी, सर पता नहीं क्यों जब से क्लास शुरू हुआ है तब से बफरिंग हो रहा है, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बफरिंग, यहां तो कोई बफरिंग नहीं है, एवरीथिंग इज क्वाइट ओके। ओके, तो डियर एस्पिरेंट्स, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। नाउ नेक्स्ट सम, ओके, ये दूसरा सवाल है जिसको लेकर कुछ सवाल सुन पाते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, सो द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली। इतना तो समझ में आ गया। अगला सवाल है, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, मतलब ए से जेड तक जो लेटर है, अक्षर है, वो 1 to 26 है। ओके, the difference between 1 2 3 4, yes Sakshi, you are correct. Now this is, please concentrate, the letters from A to Z are numbered from 1 to 26 respectively. Now the question is, if GHI is equal to 1578 1578 and DEF is equal to 912, then what is ABC equal to? Okay, I am going to repeat for your better understanding, dear aspirants. Please concentrate, please write.
The letters from A to Z are numbered from 1 to 26. Okay, respectively. It means B for 2, C for 3, D for 4, likewise, respectively. Okay, now mind the words. So this is basics. Of course, the letters are numbered A to Z, 1 to 26. No doubt. Now the question is, if GHI is equal to 1578, GHI is equal to 1578 and DEF equals to 912, then what is ABC equal to? I hope you have understood the question. Now the options are A 492, coding decoding system, sir. Yes, A 492, B 468, C 262, and D 246. So what should be the answer to this question? So I shall wait for your answer, dear aspirants. और इसको बनाना ही बनाना है, छोड़ना नहीं है. जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप समझें, बस दिस इज द पैटर्न. और चुन चुन करके क्वेश्चन ला. 246 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर. आज तो क्लास लेने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि आप बनाते जा रहे हैं, आप बनाते जा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस होते जा रहा है. वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, विकास प्रजापति का आंसर नहीं आ रहा है, कैलाश का आ रहा है, परशुराम आंसर दे रहे हैं, और साक्षी तो खैर बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रही है. तो कंसेप्शन क्लियर है तो आंसर आएगा. ओके, सो द आंसर इज 246. सो ABC इक्वल्स टू 246. सो डियर एस्पिरेंट्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने सी सेट पर भी इतना अच्छा बल दिया है. Now, please listen. Next sum, okay, let us have next sum. 1 into 2 is equal to 2. A, 2 into 2 is 4. B, 2 into 3, 6. Wonderful. C. So, this is the correct. Okay. Now, please concentrate. A number 15B. B. Okay, alphabetical letter B, and 2 numeral like 1 and 5 number. So 15B is divisible by 6. Which of these will be true about the positive integer B? तो B के बारे में पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. ओके, लाइन नंबर आपने देखा होगा, बनाया होगा, पढ़ा होगा. ए बी विल बी इवन. यू ऑल नो व्हाट इज इवन नंबर, ऑड नंबर. सो बी विल बी इवन. व्हाट इज बी? 15B. नाउ बी विल बी ऑड. सी, बी विल बी डिविजिबल बाय 6. and D, both A and C are correct. Dear aspirants, अब आपको बताना है कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा. सो अब इसको बताएं. नंबर 15B. सर अभी भी मुझे बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है. सो दिस इज बफरिंग एट योर एंड. At my end there is no buffering, my dear परशुराम जी. वो बफरिंग आपके यहां हो रहा है, यहां देवघर में बफरिंग नहीं हो रही है. and here even both, okay, A is also correct and C is also correct because that is divisible by 6. Okay, so A is correct, Sakshi, and C, B will be divisible by 6.
This is also correct. Because if it is even, then it is divisible by 6. Yes, sir, मेरे पास ही तो हो रही है. अच्छा अच्छा अच्छा. So, I hope this question is clear to you. पता नहीं क्यों. अच्छा, ये नंबर 15B. So, B के जगह पर एक इवन नंबर है and that is divisible by 6. तो ये दोनों का दोनों A and C both are correct. Now, dear aspirants, let us solve this question, and this is going to be the concluding question of the day. Okay, we shall meet tomorrow at 7:30. So if Sohan, please listen, if Sohan, while selling 2 goats, Sohan को 2 बकरी बेचना है, goats, at same price, makes a profit of 10%. कितना प्रॉफिट हुआ सोहन को? 10% ऑन 1 गोट, एक बकरी पे, एंड सफर से लॉस ऑफ 10%, और 10% की हानि हुई ऑन द अदर. यस साक्षी, करेक्ट. देन ए, he makes no profit and no loss. B, he makes a profit of 1%. C, he suffers a loss of 1%. And D, he suffers a loss of 2%. So what should be the answer? Now, for your better understanding, let me repeat it, and you should write it in your notebook, dear aspirants. If Sohan, while selling 2 goats, 2 बकरियों को बेचता है at the same time, at the same price, एक ही दाम पर, makes a profit of 10%, तो 10% का उसको लाभ होता है on 1 goat, एक बकरी पर, लेकिन दूसरे पर वो 10% का हानि होती है ऑन द अदर. देन इसका आंसर क्या होगा, डियर एस्पिरेंट्स? सो द आंसर इज सी, ही सफर्स ए लॉस ऑफ 1%. साक्षी के आंसर का इंतजार कर लेते हैं. ओके, इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, this sum, now the answer is he suffers, यानी सोहन suffers a loss of 1%. now I will take one more question. एक क्वेश्चन और हम लोग ले सकते हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे. आपने बहुत अच्छे ढंग से आज सी सेट की शुरुआत की और ये क्रम जारी रहेगा आगे भी. ओके, अभी सरस्वती पूजा के कारण मेरा क्लासरूम में माता जी हैं, सरस्वती माता, कल पूजा होगी, इसलिए मैं बगल वाले क्लासरूम में हूं. देयर इज नो ब्लैक बोर्ड. अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको बना के दिखाता भी. और सी इज द करेक्ट आंसर. साक्षी, वंडरफुल, ग्रेट. सी इज द करेक्ट आंसर. लॉस ऑफ 1% इज द करेक्ट आंसर. और यहां पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं. एक क्लॉक, एक घड़ी है, which loses time uniformly is 4 minutes ahead at 8 a.m. 8 बजे AM, सुबह 8 बजे वो 4 मिनट आगे है ऑन मंडे, सोमवार को, एंड बिकम 6 minutes स्लो at 8 p.m. on the next Monday. और अगला सोमवार को वो 8 बजे रात में 6 मिनट स्लो है. ऑन which day and at what time was the clock showing the correct time? तो आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है जब वो घड़ी सही समय बता रही थी. समझ गए? एक घड़ी है, there is a clock which loses time uniformly.
वो loses time means running slow. Okay, but it is 4 minutes ahead at 8 a.m. on Monday. 8 बजे सुबह सोमवार को वो 4 मिनट ahead है and becomes 6 minutes slow. लेकिन अगला मंडे को वह 6 मिनट धीमी है 8 बजे रात में ऑन द नेक्स्ट मंडे. ऑन विच डे, तब आपको बताना है कि वो कौन सा दिन होगा एंड एट व्हाट टाइम, और वो समय क्या होगा व्हेन द क्लॉक ओके वाज शोइंग द करेक्ट टाइम. नाउ ऑप्शंस यू शुड राइट इट. ए फ्राइडे 10 a.m., बी सैटरडे 8 p.m., सी ट्यूसडे 4 p.m. and D Thursday 8 a.m. Dear aspirants, आप बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे. तो मैं इसका आंसर बता देता हूं और तब आप बना करके इसके आंसर को मिलान करेंगे. Thursday 8 a.m. is the answer. Okay, so on Thursday at 8 a.m., this is the time that the clock will show, okay, or had shown the correct time. Okay, Thursday 8 a.m. So I hope you have enjoyed this session और काफी आपको अच्छा लगा, लाभ आपको मिला, आपने बहुत कुछ सीखा. बट दिस इज द बिगिनिंग. ये मैंने शुरुआत किया. क्वेश्चंस और लेंदी आएंगे, ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं बताऊंगा. सो ऑन एवरी सैटरडे, जैसा कि आपने रूटीन बनाया, आई शैल फॉलो योर रूटीन. और ये तो अब हमारा भी रूटीन हो गया. टुमारो एट 7:30 वी शैल मीट अगेन और एक नए ये से हम लोग मिलेंगे. हो सकता है सरस्वती पूजा के चलते द क्लास विल टेक सम टाइम, यानी 8 p.m. और 8:30 p.m. कल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो आप कहीं नहीं जाएंगे हमें छोड़कर. सिविल सर्विसेज एकेडमी, देवघर, झारखंड, ये आपके परीक्षा में सफलता के लिए लगातार अभ्यास, केवल अभ्यास. ओके, कोई पैसे की बात नहीं, ना आपको आगे पैसा देना है, ना आगे पीछे पैसा देना है, नथिंग लाइक दैट. केवल अभ्यास, केवल अभ्यास. आपको मजबूत करना, परीक्षा की जो भी आपके भीतर में जो एग्जाम फीवर है उससे आपको मोटिवेट करके दूर हटाना और पूर्ण रूप से एक सफल सिविल सर्विस, सफल सिविल सर्वेंट के क्वालिटीज इम्बाइब करना. दिस इज माय टारगेट. So thank you for joining me, dear aspirant. Let me say good night to all of you. Bye bye.